Okay guys, now let's talk about theory of equation. So in this particular topic, what we are going to discuss, we are going to talk about relation between roots and coefficient of polynomial equation. So we have discussed about the relation between roots and coefficient of quadratic. We'll again go through it in short and then we'll see how we can apply similar logic for cubic equation and higher order polynomial equations as well. Okay, so let's suppose फर्स्ट हम लोग बात करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है, तो गाइस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हमारी क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा। अच्छा मुझे बताओ, अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, इफ दिस इक्वेशन इज हैविंग रूट्स alpha and beta, then it will be equal to a into x minus alpha into x minus beta. Correct or not? Right? If alpha and beta are roots, that means x minus alpha and x minus beta are the factors of this quadratic and it is multiplied with a, that is the leading coefficient. All right, so उससे multiply करना होता है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके इक्वल आ गया? a into x minus alpha into x minus beta. Now guys, if you compare, if you multiply this, so x into x will be x square minus alpha x minus beta x. So can you see it will become minus alpha plus beta into x plus alpha beta. Okay, so ax square plus bx plus c, this is coming as a into x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. All right, so now if you compare coefficients over here, can you see ax square, coefficient of x square is a both the sides, so it's perfectly correct. Here the coefficient of x is b and here the coefficient of x is minus a into alpha plus beta. ओके, तो यहां पर गाइज अगर आप डिवाइड करोगे तो अल्फा प्लस बीटा, दैट इज द सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक is coming minus b upon a. And similarly if you compare the constant term, so that will be c from here and a into alpha beta from here. So if you divide with a, you are getting alpha into beta, that is the product of roots as c upon a. So here you are getting a relation between roots and their coefficient, that is sum of roots is minus b upon a and product of roots is c upon a. Now this is the case of quadratic. If we apply similar logic for a cubic equation, okay, so guys, if it's a cubic, alpha, beta and gamma are its roots. Okay, so let's suppose alpha, beta and gamma are the roots of cubic equation ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0. Then जैसे अभी हमने क्वाड्रेटिक में लिखा था, I can write the cubic equation as a times x cube. After factorizing part, you will get this kind of thing, x cube minus summation alpha means alpha plus beta plus gamma, okay, into x square plus summation alpha beta, that is alpha beta, beta gamma, gamma alpha into x square and the constant term will be minus alpha beta gamma. Right? कैसे आया ये? Similarly यार ऐसे देखो, अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, so you can write it like this. Yes, and here when you multiply all these factors, so can you see x into x into x, it will be x cube. Then you will have minus alpha x minus beta x minus gamma x. So you will get this kind of a thing. Summation alpha is alpha plus beta plus gamma, all right, into x square. Okay, and basically here it will be x. Okay, sorry guys, it will be x, yeah. And when you multiply guys the constant, so can you see when you multiply these two factors, there will be a term plus alpha beta, that will be multiplied with x. Similarly there will be a term beta gamma, that will be multiplied with x, and there will be a term alpha gamma, that will be again multiplied with x. So you will get an expression as alpha beta plus, let me write it, alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma, that is multiplied with x. Okay, and finally can you see the constant term will be minus alpha into minus beta into minus gamma, that will be minus alpha beta gamma. So if you simplify this kind of expression, you will get on the RHS part. Okay, this is summation alpha is alpha plus beta plus gamma. ठीक है, तो अब अगर गाइस दोनों साइड आप कंपेयर करोगे, राइट, अगेन बिकॉज बोथ द इक्वेशंस आर इक्वल, सो यू विल कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
of x and the constant term. So what you will get when you compare the coefficient of x square, guys, you will see that alpha plus beta plus gamma, that is sum of roots of cubic, that comes equal to again minus b अपॉन ए. तो क्वाड्रेटिक में क्या आ रहा था, वहां भी माइनस बी अपॉन ए था, यहां भी क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए. ठीक है, ऑलराइट. तो ये सम ऑफ रूट्स आ गया माइनस बी अपॉन ए. द सेकेंड थिंग इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू. क्या बोल रहा हूं मैं इसे, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होगा. ये लिखा है सम ऑफ product of two roots, or you can simply say sum of product of roots. ऑलराइट, क्या कर रहे हैं हम, दो रूट के प्रोडक्ट के सम ले रहे हैं. तो अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा, दैट इज इक्वल टू, अगेन बेटा हियर इट विल बी x. ऑलराइट, सो दैट विल बी इक्वल टू c अपॉन a. ऑलराइट, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो रहा था, माइनस बी अपॉन ए माइनस, देन द सेकेंड थिंग इज c अपॉन ए. सो देयर इज अ अल्टरनेट साइन चेंज, गाइस. First one is minus b upon a, then sum of product of 2 is c upon a, and finally if you see, that is the product of roots. Okay, this is your product of roots, right? Alpha into beta into gamma, so that is the product of roots, so that is equals to again minus d upon a. Okay, so sum of roots tha minus b upon a, sum of product of 2 is c upon a, and product is again minus d upon a. So you can clearly see we are having a alternate plus minus difference. Okay, तो पहले माइनस फिर प्लस, आप इस तरह से रिमेंबर कर सकते हो, माइनस प्लस माइनस. ओके, so this is how we can derive the relation between roots and the coefficients of cubic. Now guys, this kind of logic can be applied for a biquadratic, that is order 4 equation, order 5. Okay, what you have to remember, first thing will be for biquadratic, if we talk, first thing will be sum, then sum of product of 2, then it will be sum of product of 3, and finally it will be product of all the roots. So as far as in JEE, if we talk, mainly you will get question of quadratic and cubic, so that's why you can remember this. Okay, all right. Now let's solve a question. So the question is, if A, B, C are roots of this cubic, then find value of A to the power minus 2, B to the power minus 2, C to the power minus 2 beta. So how we are going to solve this question? So if you see, we have the cubic as x cube minus x square. Can you see there is no term of x, right? So can I write it as like this, 0 into x. हाँ, कोई भी टर्म नहीं है तो 0 इंटू एक्स लिख लिया, प्लस 1 इक्वल टू 0. अब हमें क्या बोला है, हमें वैल्यू निकालनी है a टू द पावर माइनस 2, b टू द पावर माइनस 2, c टू द पावर माइनस 2, विच कैन बी रिटन एज 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर का. है ना बेटा, तो देखते हैं ABC are the roots. So following our theory of equation, right, relation between roots and coefficient, I can say sum of roots will be minus b upon a, that is coming equal to 1. So a plus b plus c is 1. Okay, sum of product of 2, that is ab plus bc plus ca, that will be c upon a. So can you directly see, it will be 0. Okay, so ab plus bc plus ca is 0, a plus b plus c is 1, and finally the product of roots, that will be abc, that will be minus d upon a, so it will be minus 1. Now we are having these three equation, guys. ठीक है, हमारे पास क्या है, 3 इक्वेशन आ चुकी है. अब हमें इस चीज की वैल्यू निकालनी है. तो देखो यार, यहां पर क्या कर लेते हैं ना हम लोग, बताओ क्या करें, सिंपली एलसीएम ले लेते हैं, राइट. सो इफ यू टेक एलसीएम, हियर यू विल गेट बी स्क्वायर प्लस, सॉरी, बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ओके, प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन a square b square c square, right? This is what you will get, a b square c square plus a square c square plus a square b square upon a square b square into c square. Now if abc is minus 1, guys, can you see the denominator is nothing but it is abc whole square.
ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, एबीसी का होल स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, सो दैट मींस इन द न्यूमरेटर यू विल हैव ओनली दिस टर्म, दैट इज बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसका वैल्यू गाइस कैसे निकालें, सो इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, that is the second equation, taking its square, so guys can you see, you will get a square b square plus b square c square plus c square a square plus 2 times ab into bc, that will be 2 times ab square c, right? Then 2 times bc into ca, that will be 2bc square a plus 2 times ab into ca, that will be 2a square bc. Now from, see this thing, sorry, this will be a square into b square again plus b square plus c square, and obviously it is equal to 0 square, that will be 0. From here guys, can you see I can take 2abc common from all the terms, so what will be coming in the bracket, it will be a plus b plus c, so a plus b plus c is 1, okay, so 1 multiplied with ABC, which is -1, so it will become -2, and when you take it on the right hand side, the value of a square b square plus b square c square plus c square a square will come equal to 2. That is your answer only. Okay, so the correct answer for this question will be equal to 2 guys. Okay, so what we are doing, we are just using these 3 equations which you are getting from relation between roots and coefficient, and we are able to get our final answer. Okay, now let's talk about guys some important points related to theory of equations. Okay, so the first point over here is a polynomial equation of degree n. All right, so if you have a polynomial equation of degree n, so this will have n roots. All right, it can be real or imaginary, but अगर आपके पास n degree polynomial equation है, then it will have n roots. All right, and no more, उससे ज्यादा नहीं होंगे. that इसका मतलब अगर आपके पास let's suppose quadratic है, that is degree 2, you cannot have more than 2 roots, right? Now out of 2 roots, you know, you can have real, imaginary, that is a separate thing, we know how to find it, but this you have to remember, if the degree is n, then it will have n roots. Okay, उससे ज्यादा नहीं होंगे. all right, अगर ऐसा हुआ सर कि उससे ज्यादा हो गए, मतलब n डिग्री पॉलिनोमियल है और रूट्स n से ज्यादा हो गए, तो उस केस में गाइस वो इक्वेशन नहीं रहेगी, उसको हम लोग बोल देते हैं आइडेंटिटी. all right, which is true for more than, you know, which is true for every basically value of x. all right, it becomes an identity. all right, second point, if all the coefficients are real, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, अगर सारे कोफिशिएंट रियल हैं, then imaginary roots occur in pair. This is a very important point guys. okay, what I am saying, अगर आपके पास किसी भी polynomial equation के coefficients real हैं, all right, if the coefficients are real, then imaginary roots will always occur in pair. pair मतलब कभी भी आपको single imaginary root नहीं मिलेगा, it will be always 2. all right, or you can say 4 or 6. okay, ऐसा नहीं होगा. basically you will say the number of you know, roots are always going to be even. okay, you will not get odd number of imaginary roots. ठीक है, हमेशा even number of imaginary roots मिलेंगे. ठीक है, so this is a very important point. Conjugate imaginary roots always occur in pair. Then the third point is, if the degree of polynomial is odd, all right, that is cubic or, you know, 5 degree, 7 degree, then number of real roots will also be odd. okay, तो number of real roots कैसे होंगे, वो odd ही होंगे. क्यों होंगे ऐसा, क्योंकि हमें पता है कि conjugate imaginary roots तो हमेशा even ही रहते हैं. तो अगर हमारे पास 5 डिग्री है ना, 5 डिग्री अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन है, लेट सपोज उसमें से 2 रूट इमेजिनरी है, तो 3 रूट कैसे होंगे, रियल. तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, रियल रूट हमेशा ऑड होंगे. ठीक है, इट फॉलोज दैट एटलीस्ट वन ऑफ द रूट्स विल बी रियल एंड साइन अपोजिट टू दैट ऑफ इट लास्ट टर्म. नाउ दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट गाइज. व्हाट वी आर सेइंग, हमने ये बोला कि ठीक है, अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो ऑड नंबर ऑफ रूट होंगे. ये नहीं बोल रहा कि सेम होंगे, 5 है तो 5 है ना, एट मोस्ट 5 रूट्स होंगे. लेकिन अगर 5 डिग्री इक्वेशन है तो उसके रियल रूट्स
है ना, उसके रियल रूट्स भी हमेशा ऑड होंगे, दैट इज 5 हो सकते हैं, पांचों ही रूट रियल हो, 3 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, लेकिन कभी भी इवन नहीं होंगे, बिकॉज वी नो इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर, है ना, तो हमेशा रियल रूट ऑड होंगे। अब उसके बाद जो ये स्टेटमेंट लिखा है, तो इट फॉलोज दैट एटलीस्ट वन ऑफ द रूट्स विल बी रियल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, okay, like if you have a cubic, all roots can never be imaginary, because imaginary roots always occur in pair, that means you can say imaginary roots are always even. So if you have a odd degree polynomial equation, then it will have at least one real root, okay, और उसमें एक चीज हम लोग बोल रहे हैं कि उसका जो साइन होगा, that the sign opposite to that of its last term, अगर लास्ट टर्म नेगेटिव है तो आपका रियल रूट का जो साइन है वो पॉजिटिव होगा, और बेटा अगर आपकी नेगेटिव टर्म है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है लास्ट टर्म तो हमारा जो रूट होगा वो नेगेटिव साइन का होगा, ठीक है। ऑलराइट, now the next thing is, if alpha is a root of fx equal to 0, then the polynomial fx is exactly divisible by x minus alpha, which is a very easy point. You can understand it because if x minus alpha is a root, you will write fx as x minus alpha into some gx. Okay, so you can clearly see it will be always divisible by x minus alpha. It is always going to be a factor. And the last point is, if there be any two real numbers a and b, ठीक है, आपके पास कोई भी बेटा दो numbers हैं a and b, such that fa and fb are of opposite signs. Okay, so like this is your a, this is my b. All right, so fa is, let's suppose, positive and f of b is negative. All right, fa and fb are of opposite sign, then fx is equal to 0 must have at least one root between a and b. Why? तो यहां पर गाइस क्या बोला जा रहा है कि अगर इन दोनों का साइन अपोजिट है ना, अगर लेट सपोज एफ ऑफ बी यहां कहीं है, एफ ऑफ ए पॉजिटिव और एफ ऑफ बी नेगेटिव है, तो इसके बीच में एटलीस्ट एक रियल रूट होना चाहिए, बिकॉज इफ वी नो पॉलिनोमियल इक्वेशन ग्राफ इज कंटिन्यूअस, यू कैन सी द ग्राफ मस्ट बी गोइंग लाइक दिस at least. So you can clearly see we are having at least one root. Why at least? Because maximum it can have many roots. Okay, you can draw graph like this. So here we are having 4, 5, 6 roots. All right, so minimum it should intersect the x-axis one time, because you are opposite, so from positive to negative if you have to go, all right, you have to cut it one time. You can't break the graph, because you will see this in your higher classes. The graph of polynomial functions are always continuous. Okay, so if you start, it will go till the end. All right, it never breaks down in between. All right, so this is very important. If fa and fb are of opposite sign, then you can say fx equals to 0 must have at least one. It can have more, but at least एक तो root होगा ही होगा. Okay guys.